Nobody cares. Yes, this is big issue. So normally in city area, in corporation area, Mm. first of all, we need to in building line means builder needed to first of all pass. Actually, when the house is built on the hilly area, electricity supply is also given to them. Meet when electricity supply and water supply was supplied, so it means government is knowing the house is built there, Yes. but government is not taking decision on right time. Government is always waiting for incident. When an accident happen, then government decides something. Yes. In that time, I think government think that our consumer is increasing. It's good for Yes. our electricity supplier consumer is increasing. Our water supplier consumer is increasing. In that time, government happy. Yes, our consumer is increasing day by day. But when natural this type of thing is going, then they think, yeah, this type of house is made without our permission. That's why the reason a lot of people died. So it's totally not good for our society. Yes, yes. It's a pre-plan needed by government. Which place house is needed, which place house is not needed due to hilly area. As far away as we are developing, as well as we are developing, uh, we are going far away from our nature. Yes. Actually, distance between us and nature uh, becoming long. Yes, sir. Like we are using electricity, we are using cars, we are using helicopters. That means we are going far away from our nature. We are building big houses, apartment on the hilly areas. Means hill is being disturbed. There is a lot of pressure on the hill, and actually Himalaya mountain is made of land, soil. Soily mountain is that, not a stony. When rain is there, heavy rain happened, then soil cut down and फ्लो डाउन नीचे जाता है, उसके बाद जो है लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत सारे घर जो है गिरने लगते हैं। तो यहाँ वहाँ पे चाहिए बहुत छोटे-छोटे घर बनने। Yes, as like temporary house. यस। In ancient time, Surinder sir, हुँ, a lot of house made in every place as like temporary house. हुँ, यस, There is देयर शुड बी no. टेम्परेरी हाउस, नॉट कंक्रीट हाउस। Yes. So this is good because weight is very less in temporary house. हुँ, But every people wants to earn a lot of money. हुँ, हुँ, That's why the reason people invest a lot of money for
making house because they think that after made hotel, after made house, they will Mhm. earn a lot of money. But they don't know one time people will expired. You know, one famous temple, Shiv temple was also collapsed. And in this temple, due to Monday date, Mhm. a lot of worshipper also Mm. died in a group, 25 or 30 people. Okay. I didn't heard that news. Yes, I think 14 or 15th August. Yeah. Yes. So unfortunately, same thing happened year to year. Yes. Doesn't matter BJP government or Congress government, मम- theme is same. नेचर से कोई नहीं लड़ सकता सर, नेचर से, Yes. प्रकृति से। बादल फट जाएगा तो कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। वहां बादल फटता है उत्तराखंड में। Yes. बादल फटने पर ही का एक पूरा पानी एक जगह गिरने लगता है ना। Yes. Namaste, sir. नमस्ते सर। Hello. Namaste, sir. Today we are discussing regarding our nature, sir. Because we see a lot of news regarding Himachal Pradesh and Uttarakhand. A lot of houses collapse this rainy season. A lot of people died. So we are discussing regarding who is responsible for this because nature is normal, but people are made house a lot in hilly area. And that's why the reason every year a lot of people died in rainy season in hilly area. This is not good for society, but don't know government always silent mode and when anything any accident done, then they realize that yes, this house is not. So a lot of right now we seen news. A lot of house people needed to vacate their house due to save of our people. So this type of thing we seen in news. So Amanaz sir, you are right now working, sir. Please unmute, sir. You are mute. Yeah, what I was saying that it's a very beautiful evening, Yes, sir. uh, very pleasant. I would say that something like maybe late October, like Durga Puja time or Diwali time, Yes. and yeah, and you know what? From all building, I'm smelling Indian food smell. Whole society. It means there is Indian society present. Yeah, almost like I was telling you, almost 50% in each building are Indian people. So, most of them, Americans, they don't cook this much. That is not part of their culture. But Indians, we cook. Especially what happens is that a lot of parents, they come from India to visit.
and help small children to grow. Because, you come here, spend 6 months on one tourist visa, and in many, many cases, both parents take turn. Like, for example, Malik ji was taking turns with his samdhi for a while in California. 6 months he and his wife were here, and 6 months his samdhi and samdhan was there to take care of a small little kid. And that's very normal. This is normal for Indian and normal for Chinese too. So, so when they come here, they have to have the fresh food, right? India, you guys are not used to eating the frozen food, so so it means somebody has to cook in the evening, and so every building has a fresh smell. I'm just I'm near the pond now. I sent you guys picture this morning. I was walking at the lunchtime, so I said, well, let me take a picture of it. Did you see? Pankaj sent to Surender ji that picture which Yes. I sent you. Yeah. So Sure, what is sir. yeah? So what is the topic today? What you guys are talking about? Sir, We today are we are developing, our world is developing, but going far away from the nature. Like Yeah, some incident happening, uh, nature is alarming to us by yeah, giving some incident in Uttarakhand. The recently one thing happened. A lot of hi, houses collapsed due to heavy yeah, rain, and many men died there. yeah, So, so what is the cause yeah, and what is the cure? yeah. You have seen the similar thing in China, right? I mean, this year China has been devastated by their flood situation there. Especially even the Beijing has been in terrible shape. It's heart breaking scenes of Beijing, that how streets have turned into streams. Yeah, and I mean, probably whole Beijing was heavily impacted because of the terrible rain they got. So yeah, I mean, this is what happens when we play with the nature. Uh, the the other day I was watching that elephants are fighting on the road with people, breaking cars, because now we are not giving them the air space. We are taking even animals space. So yeah, uh, everywhere is the problem. If we don't control the population, this kind of situation, because uh, to feed the population we need the resources, and then resources are very limited, and then this is all the natural balance we have. We just unfortunately break them, and then there are consequences with it. So, for example, all the emissions we have done in the carbon dioxide in the last 150 years, it takes, I was reading somewhere that all those emissions, it takes about more than 100, 200 years to really be decomposed so that uh, yeah, it can be absorbed by the, we call it, atmosphere. And so, for 200 years, those CO2 emission is going to be causing havoc. And like Malikji sometimes tells, that a slight change in the temperature can bring very heavy rain. Uh, and our soils are very soft. It's not designed for that kind of rain. And so all the mountains will start collapsing. Even our natural field will start collapsing. And this is what we see already now. So yes, it is a problem everywhere, and the we cannot solve it in one day, but we need to start at least doing something about it.
Sir, so I think our government role is always needed See, because when yeah, our people made a house, in that time yeah, government needed to, yes, this is good or no. exactly, exactly. See, the problem is that, especially in India, it's such a terrible situation that government is has become a completely non-functional. It doesn't do any damn thing. Yes. Uh, uh, They a always say like silent mode. Yeah, they are always in the silent mode. I mean, in Bihar recently, if you guys have watched, there have been several daroga killed and several journalists killed, and people killing is very normal. Now we don't even talk about it. But now the darogas who are supposed to be protecting us, they are being killed. If they and then the journalists who report against the criminals and all that, they are being killed. And this is happening, and nobody is doing anything about it. So, and this is just a small sample of the society. Similarly, Mm. we have already talked about it that, if you look at the India, especially in Bihar, all these killings, litigations are related to land grabbing, forcibly grabbing somebody else's land is the root cause of at least 70% of the court cases in Bihar. I don't know about UP. Uh, Maybe, but UP would be less. And then it takes like very long. I mean, you cannot evict nowadays. If say सुरेंद्र जी, if बिहार का सिचुएशन ये है कि बिहार के पास में you have a beautiful empty land in the town, और बहुत बढ़िया लैंड है आपका, बहुत संभाल के आपने रखा है कि you will build a house when you retire. हाँ, एक दिन गुंडे लोग आ जाएंगे, उस वहां पर झोपड़ी खड़े कर देंगे आपको, और जब झोपड़ी खड़े कर देंगे उसके बाद आप जाइएगा पुलिस के पास, थाना, एंड देन सीओ, और आप जाते रहिएगा, चक्कर मारते रहिएगा। वो कहेंगे कि आप केस किए, वो गुंडा पूछेगा आपको आपने केस किया, तो हम हमारा एक ऐसा केस हुआ है इसलिए बता रहे हैं आपको। तो वो हम पूछे कि भाई व्हाई दे आर इंटरेस्टेड कि केस किया कि नहीं। तो अगर वो केस आपने कर दिया कोर्ट में जा करके, तो उसके बाद प्रूफ हो जाएगा कि आपका उसका डिस्प्यूट इस लैंड पर चल रहा है। ये वही वो प्रूफ करवाना चाहता है, क्योंकि आप उसको आप इविक्ट करवा सकते हैं, कोर्ट इविक्ट करवा सकता है, और उसके बाद इस ग्राउंड पर जो है वो अपना वहां पर बनाना शुरू कर देगा। एक एग्जाम्पल, आई गिव यू अनदर फाइट आई हैव इन माय विलेज। और जमीन का वही अगेन, जमीन का जो प्राइम लैंड है वहाँ पर पिछले साल जो है एक क्रिमिनल ग्रुप ने जो है एक ऐसे ही झोपड़ी खड़ा कर दिया। तो हमने उसका जो है अभी मुकदमा किया, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ओके, नाउ उसने रीजन क्या दिया, उसमें पहले पंचायत कोर्ट में मुकदमा किया, तो वहाँ पर ही गेव द रीजन कि माय ग्रैंडफादर हैज एक्वायर्ड इट। उस समय में मौखिक केवाला होता था, 100 साल पहले मौखिक केवाला मीन्स जो है रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं होता था, ये मौखिक केवाला। सो बाय ही एक्वायर्ड द लैंड by मौखिक केवाला, so I don't have any proof, but I have been on this land forever. verbal registry. तो और उसके बाद अब देखिए क्या सिचुएशन है। तो लास्ट ईयर वो बनाने की कोशिश कर रहा था, और उतना ही नहीं, और मजेदार बात आपको सुनाता हूँ कि वो जो है उसे उस जमीन का कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता मेरा उस फैमिली के साथ कोई झगड़ा दूसरे लैंड के लिए था, उसके साथ अलग है। लेकिन उसने क्या किया कि हमारा जो लैंड है उसको दिखा करके उसने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है इंदिरा आवास योजना, घर बनाने का, फ्री हाउसिंग देता है सुनते हैं गवर्नमेंट। तो हमारा जमीन दिखा करके घूस दे करके अपना वो पंचायत में पास करवाया, ब्लॉक में पास करवाया। पैसा कोई 2 लाख या 2.5 लाख कुछ मिलता है, नो आइडिया, आप लोगों को ज्यादा पता होगा पंकज। Yes. और मे बी तो वो वहां से निकलवाया, पैसा खा गया, और उसके बाद जाकर के वो हमारे जमीन पर वो जो है पिलर गाड़ना शुरू किया। जब पिलर गाड़ना शुरू किया तब हमको खबर हुआ कि भाई ये चक्कर है। तो फिर कहा लगाओ एक मुकदमा, पहले
पंचायत में लगा है मुकदमा। पंचायत का जो चीफ होता है सरपंच, वो भी गुंडा है, वो उसके चाचा के साथ गुंडे करता था। मैंने उसके चाचा और उसको अमेरिका आने से पहले जेल भिजवाया था। अभी वो इंचार्ज है गांव का। अच्छा, हाँ, वो बैठ गया, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो अभी हमने जो है हमारा भी आदमी सब जो है, उसको मैंने कहा कि भाई जाओ तुम लोग जाकर के सीओ ऑफिस में जाकर मुकदमा करो। लेकिन वहाँ का सब जो आदमी भी कैसा हुए बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं किया। मेरा जो पटीदार सब है, माई कजिन्स एंड माई नेफ्यूज who are all the, because it is a joint family owner, nobody wanted to do anything. So finally I was tired of it. If you guys are not going to do it, then I have to do something. अभी एक महीना पहले या एक महीना पहले I wrote letter to CEO or Thana Prahari of Rajnagar Madhubani, and all the documents I have, everything related. I have a big file. I compile it और उसको फिजिकली यहाँ से भेजा. I'm telling you, I could have sent it by email, which I had done already last year. मैंने लास्ट ईयर ये ईमेल से बीडीओ को भेजा था, एसपी डीएम को कॉपी किया था, उसके बाद जाकर के सीएमओ ऑफिस को किया था, डीजी को किया था. इनफैक्ट सीएमओ ऑफिस ने उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग किया था जो रिप्लाई में. They had replied that yes, we receive it, and they had forwarded by letter to DGP पटना. अच्छा, इतना ये लास्ट ईयर हुआ था. अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. I have no record कि लोगों ने क्या किया. Basically, government has not done anything. Okay, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एनआरआई हैं, बाहर से लिख रहे हैं, ईमेल से लिख रहे हैं, या तो मैंने कहा ये तो कुछ हो नहीं रहा. So this year I said okay, I'll do something because I'm tired of listening that nothing has happened. तो हमने एक मोटा सा फाइल बना के सारा वही ईमेल को प्रिंट आउट करके सब डॉक्यूमेंट को तैयार किया. एंड देन आई सेंट 3 लेटर टू, 1 टू सीओ, 1 टू थाना प्रभारी, क्योंकि उन दोनों का ज्वाइंट मीटिंग हर एक सैटरडे को होता है हर एक ब्लॉक में. तो मैंने कहा चलो दोनों को देते हैं, नहीं तो एक कहेगा साला हमको नहीं खबर किया और हमको ऑनर नहीं करता है. तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों एक ही लेटर लिखा, बट एक ही लेटर और डॉक्यूमेंट को पूरा 2 पार्ट में बांट के सेम थिंग इन 2 एनवेलप उसको किया. और यूड बी शॉक्ड, मेरे को भेजने में करीब $350 लगा. 2 लेटर को. हाँ, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू, आई सेंट इट बाय फेडेक्स, बाय एयर. यहाँ का अगर हम ईमेल से करते थे जीरो कॉस्ट, व्हिच आई हैव डन. मतलब एग्जैक्टली द सेम लेटर आई सेंट इट ऑल्सो. उसका एक दिन के बाद मैंने सीओ और बीडीओ को बाय ईमेल भेजा. लेकिन उसका तो कोई असर नहीं हुआ. पहले 1 साल से ही देख रहे हैं. सो फाइनली आई फिजिकली सेंट. तो उसके यहाँ वो अभी है. तो उसके बाद जब फिजिकली वो गया वहाँ से, फिर मैंने आदमी को भेजा जो हमारा काम वाम देखता है. वो छोटा फाइनली गया. फिर फाइनली जो है वो बोल रहा था कि अभी जो है वो आएगा अभी साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो अभी 2 हफ्ता से पड़ा हुआ है. So now this is the situation, okay, which is unheard of in this country, unheard in any developed country, कि ऐसा गवर्नमेंट का काम होता है वहाँ पर. बताइए. तो ये प्रॉब्लम है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है. अभी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूँगा. मेरे एक दोस्त हैं जिसके बारे में एक दिन हम आप लोगों को बता रहे थे. He was working with me for Intel. So he is a professor of IIT Bombay right now. यहाँ से वापस चले गए बॉम्बे में. तो अभी जो दरभंगा एम्स का ड्रामा चल रहा है, सॉइल मैकेनिक्स ये नहीं है वो नहीं है, तो उस पर हम हंस रहे थे. तो मैंने उनको किया कि साला ये तो देखिए ये दोनों जो लड़ रहा है, सो दिस इज कम्प्लीटली नॉन एक्सेप्टेबल. बिकॉज जो बिहार गवर्नमेंट जो लैंड दिया है दरभंगा में, वो पानी में की तरह है, मतलब खेत है बेसिकली. And central government is saying कि ओ आपने एक खेत दे दिया है, लो लैंड, ये है वो है. तो और उसको 3-4-5 ग्राउंड दिया है, उस टेक्निकल ग्राउंड. उसका मैंने पढ़ा उसको कि क्या क्या ग्राउंड है. So I said that once I read it, then I found that all these grounds which central government is saying is bogus. Bihar, North Bihar especially, is a soft land. यहाँ बारिश होती है, we have a rain, we have flood. So our land is not like a hilly, like what I should say. I mean, any hilly area like Uttarakhand or maybe
I don't know if we have neither Kashmir or any place. Madhya You think that Pradesh. Andhra Pradesh, whichever it is, right? So our land is really a soft land. वहाँ पर तो वो सॉइल ही बनता है कि बारिश के पानी से हर एक साल जो हिमालयन वाटर कम्स टू अस, और वो चूंकि वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्स आर वेरी लो, दे स्प्रेड and then flood the whole area, and then that's how you get maybe 1 inch of soil every year. That is how we are growing one inch or whatever it is of the soil every year is growing in the whole North Bihar because of the flood, wherever it comes. तो उसको आप बोलिएगा कि रॉकी लैंड नहीं है, it is bullshit. Why it will be a rocky land? We know that Bihar is, you will never have a rocky land in Bihar, North Bihar. तो अब एक बात हुई, तो अगर गवर्नमेंट का मेन चीज है, गवर्नमेंट हैज फाइनली गिवन द लैंड, मुझे ये वो भी पॉलिटिक्स है, बट आई डोंट वांट टू गो, बट दिस लैंड कैन बी डेवलप्ड, लैंड कैन बी डेवलप्ड, लैंड का सॉइल जो है वो उस पर कंप्लेन कर रहा था, उसी पर हम हंस रहे थे, तो मैंने उन लोगों को भेजा कि सॉइल इज नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी, भाई अगर सॉइल गुड नहीं है, देयर आर 100 टेक्निक्स नाउ इन सिविल इंजीनियरिंग, यू कैन रुड़की के इंजीनियर को पकड़ो और किसी आईआईटी को पकड़ो, यू नो सॉइल कैन बी स्ट्रेंथेंड. आजकल तो लोग समुंदर में घर बना रहे हैं, है कि नहीं है? वो अबू धाबी में समुंदर में पूरा कॉलोनी बना दिया है, चाइना ने बीच समुंदर को भर करके वहां अपना एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस बना दिया है. सो कहाँ हो भाई तुम लोग बिहार, तुम कहाँ की इंडिया कहाँ है जो आपको लैंड अगर दे दिया तो आप उसके ऊपर जो है 3 साल से ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ब्लेमिंग ईच अदर दैट दिस लैंड इज नॉट गुड, और इतना दिन में जो है तो कितना हॉस्पिटल बन गया था. सो आई सेंट हिम ए लेटर कि जरा देखिए, तो वो बोले कि यस. अच्छा, एक तो उनका हुआ. I have, there are a bunch of IITians all over this country, so I have a lot of friends who I have worked with. तो उसमें जो है एक one IITian, he is of 90s IIT कानपुर graduate in electrical engineering. और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी एक बड़े पोजीशन पर इंडिया में रहा, फिर इस कंट्री में आया, फिर so now we worked at IBM together few years. तो उसको मैंने सारा भेजा कि देखो ये बिहार में ये चला, तो उसका कमेंट था दिस, तो उसका कमेंट क्या, दिस ओनली हैपेंस इन बिहार. ये चल रहा है अभी ड्रामा वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए कि दिस हैपेंस ओनली इन बिहार. So I'm glad that at least other states are much better than Bihar. From his note, it appears that this kind of useless dramabazi and politics happens in Bihar, but not other place. So this is the problem in India has. Indian bureaucracy has a very bad name all over the world. इसीलिए हमारे आपको 1947 से लेकर के 91 जब कंट्री ऑलमोस्ट वाज बिकमिंग बैंकरप्ट, उसका जो डेवलपमेंट का रेट है उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स. द रीजन दे कॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बिकॉज हिंदू नेवर ग्रो. एक कंट्री में जो हम लोग हैं वहाँ से कहीं निकले ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, हमारा ग्रोथ कुछ होता ही नहीं है. वी श्रिंक, we never grow, right, in numbers. So when they say in economics that Hindu growth rate, basically it means that it is a recessionary economy, or not growing economy, stagnant economy. That's what it means. So अपने यहाँ के जो बाबू हैं officers, they have the mindset of that, and basically, as you know, that states and center all is run by these Babus, IAS, and staff, and they are completely irresponsible people. They have no respect for people. They have no respect for country. They have no respect for economy. I mean, they don't care. All they come is that they come to the office, maybe whole day. Probably they will see a few emails, और 10 email का जवाब दे दिया, कुछ ऊपर भेज दिया, कुछ नीचे भेज दिया. They are done. If they don't have a feeling like the private economy, that they are responsible for making sure as a project manager or a part of a project management team
that things are progressing. उनका mindset है कि अगर progress हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तब भी अच्छी बात है. And this is a classic example of Darbhanga AIIMS, that nobody cares. You have all the IAS running the state and center, and they have a bunch of engineers there. Similarly, whatever secretaries they tell, whatever answer, like, if you take a glass with water, half glass full, somebody can say, if you go to two engineers, you have a choice. You tell that, hey, do you think this glass is half full? Engineer will tell you yes. And then, so when you need a glass to show that glass is full, you will use that comment and say glass is half full. Now, here you are as a government official, another situation where you have to show that glass is empty. So you will go to another set of engineer or same engineer. Now you will ask that engineer, do you agree with me that glass is half empty? The engineer will say yes. So now this time he will say that, look, my engineers, they told me the glass is half empty. It is empty now. So that is exactly happened in this case. आप एक ही इंजीनियर से 5 तरह का स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं, or because yes, it is not perfect soil, you have to develop it. So he can say that one, that yes, soil, it will cost all. I saw the comment, engineers said they have saved their ass, that yes, it's not perfect land, and basically you need to develop it, you need to do the work for strengthening the soil. So what is wrong with that? Do it. तो ये चलता है अपने यहाँ. तो इसीलिए, and this is the story of most of the developing country. ये इंडिया का ही खेल नहीं चल रहा है इस तरह का. There are many other countries who are in the boat like this. I think, sir, in Bihar, I think I like Yogi Adityanath ji needed as like CM. Yes, I think now I am not anymore. Really very good Yeah. for BJP. Now I think this would be good if Modi ji met the prime minister. I think Modi ji बोलते हैं, योगी जी, मोदी का जलवा खत्म हो चुका है. Modi Yes. is after closely looking into the Bihar incident, I don't think and he announced that hospital, पूरा 5-7 हॉस्पिटल का उन्होंने नाम लिया था, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, आसाम में, सब फंक्शनिंग है. And then I came to know, and today I got a confirmation from my friend, जो IIT में प्रोफेसर है, उसने लिखा है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, कि गवर्नमेंट जो है पहले तो स्टेट होता था, और स्टेट में थोड़े मेडिकल कॉलेज, थोड़े इंजीनियरिंग कॉलेज थे. मोदी जी ने क्या किया है कि पूरा बाढ़ ला दिया है IIT का, IIM, IIT, वो बोलते हैं IIT, IIM and AIIMS. उन्होंने इसकी बाढ़ ला दी है, but he has not given any funding. So जो पहले वाले भी हैं IIT, they are all suffering. I'll forward you that later. He said that everything is collapsing. Whatever existing infrastructure we had in education, I mean, for your information, we don't have a single university in India who is in top 100. World के जो top 100 universities हैं, India doesn't exist there. So we already are that bad. Okay. और उसके बाद वो भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बता रहे हैं कि it is not working. उसमें कोई भी चीज आपको इंस्टॉल करवाना है तो 5 जगह से कोट लेना है, ये करना है, मतलब गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी छाया हुआ है. It is such a huge waste of time, even उन लोगों के लिए who are not used to facing this kind of bureaucracy. So this is the ugly situation. So if your government has a mindset like this, then naturally things will not progress, because there are 3 stakeholders. It is government, and first is the government, then is the people, and then third is what I was going to say here. This officials. These are the 3 people who will have to work together, right? And suppose
we as a public stakeholder, we want things to be done fast. लेकिन दो जो पहिए हैं सरकार के, मंत्रीज एंड these babus, उनकी दूसरी दुनिया है. I mean, everywhere. I was shocked. I was reading my father's diary recently. मेरे फादर को अपना स्कूल का पेंशन फिक्स करवाने के लिए he has to bribe at district level and Patna both to, this is the situation. A person who becomes like 60 years, 65 years old, मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले वो रिटायर किए होंगे. Even in that time, I see, and he's writing आज मधुबनी के फलाने क्लर्क से मिला और उसको इतना पैसा दिया ताकि वो मेरा लेटर जो है आगे फॉरवर्ड कर सके. I mean, like, is it, this is a very उन्होंने घूस दिया? No, this looks like to me as a normal business transaction. हमारा नेचर हो गया है. So जैसे ग्रोसरी खरीदना और लाना, मार्केट से जाके पैसा दो और ग्रोसरी लो, इस तरह का ट्रांजैक्शन was happening even 20-30 years back, कि आपको हर चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा. तो ये तो है वहाँ का हाल चाल. तो आप लोग तो धन्य हैं जो वहाँ पर आप लोग जो हैं, you are enjoying life. मैं तो डेड हो गया था. मैं अगर ऐसा तो क्या नहीं करो सर, कहाँ जाएंगे हम लोग? जाएंगे महाराज, हम लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट प्लेस है हिंद महासागर. अरे बाप रे बाप. तो ये हाल है अपने यहाँ का. या तो बेसिकली I mean, we are habitual to giving bribe. We go for any, be ready to go to give bribe as to complete the task. Yeah. In the station, in the kachari, in the any offices, we are ready to go give bribe. We know that any work cannot done without bribe. Yeah. So that is the huge difference. वहाँ का और यहाँ का में. We don't have that kind of culture here. ना तो कोई मांगेगा आपसे, ना आपको देने की जरूरत है, और ना कहीं आपको ऑफिस में कहीं जगह जाने की जरूरत है. You go only when you are needed. अब डॉक्टर के ऑफिस में तो आपको जाना ही पड़ेगा, उपाय क्या है, राइट? So you have to go. उसी तरह कोई अगर आपके पास आपने कोई गड़बड़ कर दिया है तो कोर्ट का केस है तो कोर्ट हियरिंग के दिन तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा. बट दैट्स रेयर. ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे कि आपको कोर्ट का भी केस है तो देन एवरी तारीख जो अपने यहाँ बोलते हैं जो फालतू है, नथिंग हैपेंस ऑन द कोर्ट केस डेट. यहाँ ऐसा नहीं चलता है. There has to be something, some proceeding has to happen. आज की तारीख में कुछ तो प्रोग्रेस होगा काम का. दो पार्टी हैं तो जिस पार्टी को पिछले तारीख में कहा गया था कि भाई आपने ये चीज़ नहीं दिखाया है और आपने वादा लिया था कि बाय नेक्स्ट तारीख I'll have everything, तो उसके लिए तारीख आज की तारीख है. तो देन यू शो आपने पिछले 2 हफ्ते या 1 महीने में क्या किया, व्हाट इज योर प्रोग्रेस, व्हाट यू हैव एविडेंस. और अगर आप ऐसा ही 1-2 बार ड्रामा करिएगा तो अपोजिशन वकील जो है वो कहेगा कि सर ये तो ड्रामाबाजी कर रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग द केस. ये इसको फैसला इनको मालूम है कि फैसला, वो ऐसा बोलेगा कि इनको मालूम है कि फैसला इनके विपक्ष में जाएगा, इसलिए ही इज ट्राइंग टू ड्रैग द केस. सो कैन यू प्लीज डिसमिस द केस. वो चढ़ जाता है कि भाई आप they have no any document. They have no any document. That's why they are trying to only tarikh. Yeah, he is trying to take time unnecessarily, and he's wasting court time, my time, your time, everybody's time. Or time is so valuable, so please dismiss the case. और मान लीजिए इसके बाद फिर एक तारीख और आपको दे दिया, उसमें भी आप अगर कुछ नहीं दिखा सके आपका वकील, that फिर ड्रामाबाजी, तो then that's it. You know कि what is coming, X will fall, खत्म, court case will be done. तो ये चलता है यहाँ पर, ऐसे होता है यहाँ का मुकदमा. ये नहीं कि भाई हमारा जो मुकदमा सब जो बता रहे हैं ये सब मुकदमा, मतलब मुकदमा तो हम कर देते हैं, उसका फैसला होता ही नहीं है. मैं क्या करूंगा, मेरे पिताजी ने 2-3 मुकदमा जनरेशन सर. हाँ,
तो चल रहा है. Generation I just started one last year. So I take credit for that start. I'll send you guys the material and I'll send you. You will laugh that this is the situation अपने यहाँ है कि मतलब ईमेल का कोई वैल्यू ही नहीं है. Nobody takes does a recording. पता नहीं कहीं पर कि अगर आपको दिन में 50 ईमेल आता है या 50 चिट्ठी आता है, एटलीस्ट पुराने जमाने में जितनी भी चिट्ठी किसी ऑफिस में आती थी, उसकी एटलीस्ट रिकॉर्डिंग की जाती थी कि आज 25 चिट्ठी आया. जो भी चिट्ठी हो, जैसे हमारा इंटरनल, हम सिंचाई विभाग में थे तो हमें याद है कि एक किरानी होता था, उसका काम होता था वही कि जो भी चिट्ठी आज जाने आई है सबका रिकॉर्ड करना और क्या है किसके पास, फिर उसको भेजना है और उसका उसी तरह से जो चिट्ठी वहां से बाहर जाने वाली है हमारे ग्रुप से उसको करना. उसको डिस्पैच क्लर्क बोलते थे. उसका काम ही फुल टाइम यही था कि देखना like inward and outward. हाँ, बस कितनी चिट्ठी आई. अब जो है ये काम कोई करता ही नहीं है. So basically the pile of चिट्ठीज are in all the block office or everywhere or थाना. कोई ना कोई केस रजिस्टर करता है. मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन हैज कोलैप्स्ड राइट नाउ इन बिहार. देयर इज नो. और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने आज 5 दिन से लिखना शुरू किया है कि व्हाई वी आर नॉट इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन बिहार. तो प्रेसिडेंट रूल आजकल कब लगता है भाई? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड व्हेन you think now president rule will come? मतलब ऐसा क्या है अब? When do you think that it's time for the president rule? क्या है ऐसा थ्रेशोल्ड? अब वहां पर इतने हर दिन 10-20 लोग जो है गोली के शिकार हो रहे हैं. कुछ काम नहीं हो रहा है, हर जगह सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इज खत्म. तो व्हाट एल्स? एजुकेशन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, ऑफिस नहीं चल रहा है, बिजनेसमैन भाग रहे हैं. आई मीन what else you need to do the president rule? Sir, I think as per government norms, sir, president rule is applicable when no any party has enough seat to making us like CM. Yeah, post. so that is the only condition. That is the only Yes. condition. So Yes. if you have a terrible law and order like what we have in Bihar, that is not the situation for the president rule. This is called normal state condition in India. Yeah. So Surendra ji, now we need to make Yogi ji our PM. Modi ji ka chala gaya time. I don't think he is any more effective. Yes, I think sir, Modi ji mind is third term is needed by Modi ji, but I think after win election they need to hand over to Yogi ji. Yeah. लेकिन after election. लेकिन आपको लगता है, do you guys think that Modi ji third term will, I mean BJP will win? क्योंकि हमको तो बिहार का जो हाल हम देख रहे हैं कि हर बीजेपी एमपी को गाली पड़ रहा है. आई एम वाचिंग एवरीथिंग बिकॉज दरभंगा का जो एमपी है उसको हम ही लोग गाली दे रहे हैं. दरभंगा वाले एमपी को. आप लोगों को हमने फोटो भी भेजा है, सुरेंद्र जी को भेज दीजिएगा. हमारा फोटो हमने पैरोडी तैयार किया है. किसी एक ने 1 राउंड पैरोडी तैयार किया था, मैंने उसको 2nd राउंड किया है. तो सुरेंद्र जी जरा देखिए वो पैरोडी. फोटो सर? केजरीवाल फोटो? नो, उसको मैंने बदल दिया. केजरीवाल और दरभंगा का एमपी जो था उसको मैंने केजरीवाल को बदल के उसका चेहरा वहां पर नीतीश कुमार का लगा दिया है और एमपी का फोटो बदल के मोदी का लगा दिया है. ओके, I sent you. I did this engineering last night, so let me see if I sent you or not. No sir, we received only Kejriwal photo. मोदी जी थर्ड टर्म में सर आएंगे because there is no option before the public. हाँ. Opposition parties had no face like popular face like a Modi ji. So that is why there is chances to win the election for Modi. Oh, yes, I think Kejriwal needed some more time, I think. ना, केजरीवाल का चांस अभी कहाँ बनेगा. सिंगल सीट नहीं है सर यूपी में. यूपी से डोर खुलती है
शासन की। हाँ हाँ, वो तो है ही। सत्ता की Yes, जूर जो है यूपी से खुलती। मोस्ट ऑफ द सीट्स आर अवेलेबल इन यूपी, सो you are right. You are right. दे हैड टू विन द इलेक्शन। that- And in UP, Yoginath is always present. Yes. यूपी में So अभी भी उन्हीं का, बीजेपी का ही राज रहेगा अभी यूपी में, बिकॉज योगी जी इज वेरी पॉपुलर इन यूपी। हाँ, नो डाउट योगी जी देयर आर परफेक्ट करप्शन, करप्शन है हाँ सर, नो डाउट यूपी में भी करप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो या है सबसे बढ़िया योगी जी हैं अभी तक जो या भी आए शासन सत्ता में, सबसे ठीक है। yeah, there is no doubt about it that Yogi is the best so far. Okay, so let me see if I can send you guys this one. Okay, जरा इसको खोलिए तो ये अभी हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा है आपको, mail, अमेरिकन एंड डू यू सी दैट? mail or WhatsApp, sir. No, WhatsApp पर I say hopefully he will get it also. So open that, then there is that parody. I think it's the third or fourth slide. जरा इसको खोलिए, मैं ही खोल रहा हूँ उसको। Till now not received, sir. No, Tirhutia, I have sent you on the क्या बोलते हैं इसके ऊपर में, लिंक मैंने भेजा है आपको। Okay, mail or नो link. अमेरिकन एंड ब्रिटिश पर जो है आपका जो फेसबुक Yes. है, उस पर मैंने लिंक भेजा है, उसका टाइटल है तिरहुतिया मीडिया प्रेजेंटेशन फाइल। हैव यू रिसीव दैट? Yes. Right इट इज now, sir. प्रेजेंटेशन, गूगल प्रेजेंटेशन। Yes. ओके, सो नाउ ओपन दैट। So basically, hopefully you will see the slide. अब पता नहीं कौन Sir, सा now है। I open, sir. हाँ, ओके। जरा सुरेंद्र जी, did you get it? सुरेंद्र जी को मिला? यस। तो मैंने Yes. चेहरा बदल दिया, I'm seeing that. बदल दिया है एंड उसके बाद तो मैंने तिरहुतिया मीडिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग तिरहुतिया मीडिया, सो दैट इज हाउ इट इज मीडिया। Yes. और देखिए हमारे सीएम क्या बोल रहे हैं और पीएम क्या बोल रहा है, तो अब बाकी जनता को, आप जनता जनार्दन चूज करे कि क्या कंक्लूड करती है। मैंने कहा कि आप लोग दोनों आंख नहीं मिला रहे हैं, क्या बात है? तो ये तो हाल है अपने यहाँ का, कि मतलब कुछ तो मैं कुछ ना कुछ जो लिखता रहता हूँ, बेसिकली करंट अफेयर्स पर मैं यहाँ डालता हूँ। और मेरा एक नया स्टाइल अब हो गया है, अब क्योंकि पीपल के पास टाइम नहीं है, लंबा चीज अगर आप लिख देते हैं तो कोई पढ़ता नहीं है। सो Yes. आई हैव कम अप विद आइडिया कि एक पेज का, जैसे अभी ये है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, एक पेज में ही जो मैसेज कहना है कह दो। सो यू विल सी दैट many one pager articles I have posted like on Facebook or Twitter। तो इसी तरह से मैं करता हूँ। That's how I comment my because अगर एक पेज रहता है तो लोग देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, बाकी तो अगर आपने पूरी किताब लिख दी तो nobody will even open it, देखते ही डर जाता है कि ये आदमी तुमको मार देगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जब हमने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा तो अभी इस उम्र में हम क्या पढ़ेंगे भाई? मारो मत। हम तो यहाँ पर फोटो देखने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा लो भाई, फोटो देखो। फोटो देख करके ही समझो। तब मेरा इसलिए मैं एक पेज प्रेजेंटेशन कई सारी चीजों पर लिखा है मैंने, देखिएगा इसमें सबको डालता रहता हूँ। इस तरह से 3-4 मेरे प्रेजेंटेशन फाइल्स हैं। और तो अभी एम्स की बात चल रही है, इसलिए एम्स पर अभी जोर लगा रहा हूँ कि क्या सब हो रहा है। अब ठंड लगने लगी, देखिए नाउ आई एम फीलिंग लिटिल चिली। अपने यहाँ जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में एक चादर वादर लेना पड़ता है रात में, सो आई थिंक दैट इज द टेम्परेचर नाउ। तो अभी तक तो ठीक था, अभी कई लोग घूम रहे थे, और अब वेदर इज चेंज।
हाँ तो माने घूम तो लोग अभी भी रहे हैं, लेकिन यह है कि अब थोड़ी सी हम भी अब घर की तरफ चल देते हैं, क्या करें घर पे बैठे। हाँ और तो अच्छा ये पंकज, so what is the situation in the meeting now? We are not meeting every night. It has no No, interest. sir. Now only morning time we live every day, and Okay. evening only Saturday. Means Okay. today night. अच्छा 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 अच्छा. Okay. So that's what it is. Okay. So I'll be needing your services later on. I'm trying to, maybe then we can connect because जो है ना क्या बोलते हैं तिरुतिया media. I want to start adding, like, for example, few videos I have made. I want to post it there. So we can do one evening that together when you have time. Yes, And yes. and then also the second thing is that I am Surender ji might also be interested this one. Uh, I'm thinking that to arrange a digital conference on Mithila, like, all the scholars, professors, whoever is writing, or PhD student or master's level student on socio-economic topics like, history, sociology, archaeology, those kind of things, politics, uh, topics like that. People can write an article, and then we can give an option in a conference. Maybe we do it initially, like I want to do at least one this year, sometime in December, November, December time frame. So basically, we we train them professional way, the way things are done in this country. Okay, so what it is that when you go to conferences in this country, they are all digital now. You don't have to really go. Basically, that was my time. So basically, there are a bunch of organizations. They are not only the universities; they are private organizations, associations, and they organize the conferences. They will rent a place in the hotel, and then everybody will come to attend the uh, conference. Or nowadays, digitally, they come to attend the conference. So that is the conference. But in the sorry, let me finish this one. So in conference, normally you have 15 minutes for one paper, 15 to 20 minutes. So basically, you have time to present the paper for 10 minutes, and 5 minutes will be for question answer. Then that's it. And then after that, it will go to the second presenter. So basically, in one, take a format. Either you will have 15-minute format of four paper, depending on how many papers you have, or you will have 20 minutes format, three papers in an hour. And normally it is like 2 3 hours. After that, people get tired. So in one day, you don't do more than 3 hours of conference. Then after that, you enjoy. So that's the setting. So I want something like that, a digital conference to be done on Mithlat later on. So what it will require, uh, I am talking to some people like Parmeshwar Shah. He came, he was in the planning. I talked to him yesterday that we want to register a organization first, for, and then we will advertise that, hey, if you are a professor or teacher, if you have interest in topics like um, primary education in mother tongue, that's where Surender ji will come into picture, because otherwise he will not be connecting to Mithila right away, unless he does like tourism or something on Mithila, right? Some historical thing. So, so all the topics will solicit from people that if you are a scholar, professor, you write the thing, and then you submit those, and then basically on conference day you present. So this is a task, and I'm looking for some volunteers, and this will be like, of course, in the English will be the main language. So so here is the project. So basically, down the road, I will be asking you guys to help me in volunteering it, to set it up, and things like that. Sure, sure, sir. Yeah. Sure, sir, In that sure. I connection, will.
Yeah. In this That's connection, I the remember, yeah, that there was a guy in Canada who came couple of time. I don't remember now the name, and he has a Himanshu ji, business. He's Himanshu, also Himanshu ji. He Himanshu Himanshu or ji was something. live from Canada in this session, in our session. Yeah. So I remember that you one time you had invited somebody who came from Kerala, and they were talking about website. So it seems that he has experience in developing the website. I mean, I know it is a common thing now. Anywhere you Yes, can sir. find somebody website development. But I want to connect with him on this subject because once I start, the very first thing you need is that here nobody gives the physical address. So all you need is a post office box number. So that's very easy. Uh, I I register and I get the box number, and then after that, third thing I need is a website, and then website for this research uh, that people have to submit abstract, people have to submit you know, later on the first draft, second draft, and then conference, and then presentation. They have to submit. All these papers have to be submitted, and then I have to have the system where I can handle all of this. And then comes the presentation day, and then deliver the after the presentation, give them the certificate. So, that is one of the thing I want to do. I still have few years, so I say that this will be more intellectual type of work, which can be done, and so, and people will get just like you are getting practice of speaking English. This way, your young generation, and it will be open to all everybody, students, college students, university students, and in fact, I'll give some grant to some students to the topic I want research to be done. For example, I tell you, I am looking for a student, a master's or PhD student who can analyze the data for the BPSC, uh, uh, all the published results from 1960 to now. So I think it was 1960 or 62 when Bihar Public Service Commission started. And this was started by Dr. Amarnath Jha, who used to be chair of UP Public Service Commission for U. Surendra Ji. So he moved from UP Allahabad to Bihar and established the Public Service Commission in Bihar. So he gets credit for that. So when it started, I want, since Bihar is a very casteist type of organization, and there is a lot of issues in the caste, I want to see the impact of the different success rate of different caste, and then even in the like we have three groups like general group, OBC group, and then third group is Dalit group. Then so there is three groups, and then we have three regions: Maithili speaking region, Maghi speaking region, Hindi speaking region, and Bhojpuri speaking region. So I want to see, and since our exams are all held in Hindi, my thesis is that those whose mother tongue is Hindi, they are by default getting a huge advantage over everybody else. And this is what I want to prove that it is wrong. Everybody should have. First thing is that you need to give education in the native language. Psychologically, it has been proved that all the students they get better education if you give them at least primary and middle school education in their native language. So up to middle school, you do the education in Bhojpuri, Maithili, Baghi, Avdhi, and then after that you have choice. You give them they are teenager. They can switch into Hindi medium or English medium. That's how in India we should be pursuing the education. But what is happening right now? We have forced everybody to study in Hindi in Bihar, and that is a huge disadvantage. I remember, and I'm sure Pankaj, if you are from the village, you remember that suddenly we don't know how to speak Hindi, and suddenly we are in a class where everything is in Hindi. Physics, chemistry, math. Yes, yes, you know, Master Sahab is talking, and it is like Greek to us. I remember my eighth class, I think, eighth or sixth, seventh class, something like that. So this is very bad
This happens only in India and only in our northern states. Because, and what we have done in this process, we have killed so many our northern Indian languages from Haryana to Bihar, you know, Assam and Bengali, they are intact. But now बिहार 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 में हम लोग अभी मैथिली को हिंदी जो है मैथिली का जब्बा करने में लगा हुआ है यानी बकरीद लाइक मैथिली इज ए बकरीद क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस फॉर हिंदी। वो हर एक देखिए खाते खाते पूरा राजस्थानी को खा गया, बुंदेलखंडी को खा गया, अब उधर ब्रज को खा गया, अवधी को खा गया, तो सारे लैंग्वेज को खाते खाते अब जो है वो मैथिली पर भिड़ा हुआ है। तो हाउ कैन वी मेक मील? तो उससे वी हैव आई मीन यू नो ठीक है हमारे पास एक लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी आया है, बट वी हैव आल्सो लॉस्ट so many things with it. So this is my some plan going in my head right now. We'll talk about it sometime later. Yes. And main purpose is means primary education needed in our native languages, sir. Yeah, that's the whole But practically, point. A lot of languages. Because if you don't give them primary education, you know हम लोग सब समझते हैं कि लोग भी बोलते हैं जैसा एक दूसरे सुन के भाई मास्टर साहब अभी इस पर आई वाज इन वन मीटिंग वेयर कि पेरेंट्स दे themselves encourage मास्टर साहब टू गिव एजुकेशन इन हिंदी और इन इंग्लिश, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो दे विल बी ब्राइटर मोर सक्सेसफुल, राइट? बट इट्स अपोजिट, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, उन्होंने किसी और से सुन रखा है, अरे भाई उसका बेटा उसका भतीजा उसकी बेटी ऐसे कर गई, यू नो। खाली स्कूल ही इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द किड्स सक्सेस, देयर आर मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग सुरेंद्र जी चले गए क्या? इज ही स्टिल देयर? नहीं, यस सर, सुरेंद्र सर इज देयर। हां सुरेंद्र जी जैसे हम staying here. या ओके। सो बेसिकली हम लोग जो हैं we come from, let's call it from the village, but we are from the, let's call it a poor middle class people, you know, we're not exactly poor. घर में खाना वाना मिलता था, you know, we had enough family resources कि खाने का प्रॉब्लम नहीं था, खाना कपड़ा मिल जाता था और जो है हम लोग स्कूल चले गए। लेकिन इमेजिन एट द सेम टाइम हमारे जो मजदूर थे खेतों में काम करने वाले हमारे आपके, you know, they didn't have that facilities. उनको जो है 14-15 साल में ही जो है काम ढूंढना पड़ गया था और वो लोग मजदूरी शुरू कर दिए। नहीं तो उनको माँ बाप बोले कि भाई अब तो तुम 15 को हो गए, अब तुम 16 को, नाउ यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग। उनको याद है कि हमने टीनेजर, हम खुद ही टीनेजर थे जब 16-17 के, तो मैंने ऐसे ही 2 बच्चे को जो 14 साल का था उसको 15 दिन का काम दिया था अपने खेतों में, फर्स्ट डे ऑफ वर्क, फर्स्ट जॉब क्योंकि दोनों के फादर जो थे हमारे खेतों में ही काम करते थे, वो हल चलाते थे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो मैंने फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर उनके दोनों बच्चों को दिया व्हेन आई वाज नॉट इवन माई सेल्फ 18। मैं जो था गांव में जो है वो खेती बाड़ी में हेल्प करता था, खेतों में जो है धान के खेती के टाइम में उसको धान को यू नो मजदूर को लगवाना, कौन सा हल कहाँ जाएगा, सो यू नो, so I had learned the program management by default by helping family in the farming business, farming thing। वो मुझे अमेरिका में काम आ गया। ये जो है लोगों से काम कैसे करवाया जाए, ये जो मैंने गांव में सीखा, I utilized it in America very well। तो इसलिए मैं I was a very successful manager, क्योंकि मुझे वो टेक्निक गांव में ही पता चल गया था कि लोगों से काम कैसे लिया जाए। उनको थोड़ा बुद्धियारी से समझा के, प्यार करके, कभी चाकू दिखा करके, कभी तलवार दिखा करके you know, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी गुंडागर्दी का डर दिखा करके, you have to do that one, right? तो अब तो ये है कि तो हम लोग जो है क्योंकि हम लोगों के पास रिसोर्सेज था इसीलिए हम लोग पढ़ गए, आगे बढ़ गए जहाँ भी हुआ।
लेकिन वो लोग वहीं रह गए। ये नहीं है कि हम लोग बहुत तेज थे और तेज हैं, और बच्चे जो गांव के जो हमारे मजदूर के, वो जो है वो दे वर लेस फॉर्चुनेट, इसलिए वो वहीं फंस गए, वो कहीं कुछ नहीं कर सके। और बाकी जो है वो अपने फादर की तरह ही जो है वो बेसिक सब्सिस्टेंस लेवल पर ही काम करते रह गए। मतलब जैसे अभी भी है, मैं जाता हूँ तो आई रियलाइज, मैं अभी सोच रहा हूँ कि जाके कुछ करूँगा, दैट्स माय प्लान, कि वो लोग अपनी पूरे जिंदगी भर काम करने के बाद they were not able to even buy few pieces of land, कोई नहीं कर पाया, बिकॉज उतना इनकम ही नहीं था। खाना पीना अगर हो गया, साल में 2 साड़ी अपना वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए 2 धोती, और बच्चों के लिए 2 टूक कपड़े हो गए, तो दैट्स इनफ। Means whatever they earn in a year, they expend in whole year. या वो सब्सिस्टेंस में ही चला गया, तो आपको सेविंग तो होता ही नहीं था, वो कहाँ से I करेगा like बेचारे को। या as like non-profitable organization. They have no earn आप आई डोंट नो पंकज, हमारे यहाँ था गांव में कि 4 किलो या 5 किलो हम मजदूरी देते थे, you know, and they had to come to the farm like 8 बजे आ जाते थे वो लोग, हमारे दालान पर आ जाते थे 8-7 बजे, और हल लेकर के, और बैल तैयार रहता था, एक नौकर था हमारे यहाँ, उसको खिलाता पिलाता था, हम भी हेल्प करते थे पानी वानी पिलाने में। वो नादी में, क्या वो नादी बोलते हैं ना अपने यहाँ, yes, उसमें जो है for भूसा उसा डाल के सब उसको खिलाते पिलाते थे, बैल को पानी पिला रहा हूँ। उसके बाद वो लेकर के दोनों हल चले जाते थे, तो हल वाले उसका डेली का काम था, सालों भर का, दे यूज्ड टू गो। और उसके बाद क्या होता था कि 9-10 बजे जो है अपने यहाँ उसको पन पियाई बोलते हैं, जलपान, तो जलपान लेकर के हमारी माता जी रोटी बनाती थी, और हम जो रोटी करके पैक करके देती थी, एंड मैं उसको ले करके रोटी और पानी लेकर के मैं खेत में चला जाता था उस सबको खिलाने के लिए नाश्ता। हाँ, और उसके बाद मैं फिर चला आता था, उसके बाद हमारा स्कूल जाने का टाइम रहता था, तो आई यूज्ड टू गो, और वो लोग अपना खेत करके 1:30-2 बजे आ जाते थे। दैट इज देयर डे, दे वर खत्म, अपना उनका काम खत्म हो गया, और उनको इसके बदले में इतना ही मिलता था कि उनकी फैमिली की 2 टाइम की रोटी बन सके, और हट में जहाँ रहते थे वो रहें, 2 कपड़े ये वो। अगर कोई मेजर इवेंट आ गया घर में उनका, तो फिर हमारे घर से ही उनको हेल्प मिलता था। जैसे मान लीजिए कोई लड़की की अब शादी आ गई, दे कैन नॉट अफोर्ड, अगर कोई मर गया, उनके फैमिली में कोई गड़बड़ हो गया, तो देन यू नो एवरीथिंग वी हैड टू डू फॉर देम। तो ये था। So I'm looking at it, it's a very terrible condition they have gone through, और हम लोग सक्सेसफुल जो मिडिल क्लास के लोग हैं। But right now, sir, time is changed, sir. You know, sir, right now they received a lot of rice by PM Yojana, Pradhan Mantri Yojana. Yeah. And they also earn money in a which is good. Only village place. They have right to go to Punjab, Delhi. Yes. So, right now I also belong from same family, sir. Yes, sir. I know. Yeah, that's why I say that. I mean, we all have pretty much those who have come up from the village side in Bihar and Eastern UP. We pretty much have the similar setup. लेकिन मजदूरी जो था उस जमाने में, सोचिए 5 किलो राइस, 5 किलो राइस भी नहीं, धान। My God. तो भी लोग झगड़ा करते थे कि फलना मालिक ने मक्का दिया, फलना मालिक ने चावल दिया, फलना मालिक ने गेहूं दिया। यस हमारे यहाँ वो नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ धान की खेती होती थी, तो हम धान देते थे। लेकिन एक चीज मुझे, इसके अलावा मैंने एक चीज और वहीं पर डिस्कवर किया कि जब मैं थोड़ा सा 17-18 का हुआ कॉलेज जाने के टाइम में, तो मुझे लगा कि जब मैंने इशारा देखा, देयर वर कम से कम 2 तो ये हलवा था, जिसको हल जोतता था, और करीब खैर में 4 या 5 या 6 फैमिली थी जो दूसरे तरह के काम करते थे, धान रोपना हुआ, कमैनी, ये वो फलना चिला, है ना इधर। तो देयर आर अबाउट 7-8 फैमिलीज who were dependent on us and we were dependent on them for cultivating और उसको प्रोडक्ट को घर तक लाना है। तो ये था साइकिल। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि my mother is a store manager.
गेहूं उतना नहीं होता था हमारे टाइम में, धान की Yes. खेती होती थी। गेहूं तो हमने ही थोड़ा बहुत करना शुरू किया था, पंपिंग सेट वगैरह खरीद के। व्हेन आई वाज टीनेजर आई स्टार्टेड डूइंग व्हीट। तो धान की खेती होती थी, तो बखाड़ी अपने यहाँ बोलते हैं उसको, राइट। तो बखाड़ी में वो आ जाता था, स्टोर हो जा गया, और उसके बाद जाकर के उसमें से थोड़ा थोड़ा के बीच में निकाल करके घर में ले आया जाता था। एंड देन माय मदर जो है हर दिन जो है वो 5-6 जो फैमिली थी उसकी वाइफ या उसके घर की कोई औरत आ जाती थी वो बॉइन लेने, उसको मजदूरी लेने के लिए। हमारे यहाँ बॉइन बोलते हैं उसको, अपने यहाँ बिहार में पता नहीं, यूपी में उसको क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते होंगे शायद, वहाँ पर ज़्यादा हिंदी खड़ी है। तो एनीवे, तो वो लेकर के, अब देखिए अब क्या था उनके यहाँ, तो हमारे यहाँ से जो लेकर के चले गए बॉइन, वो लोग मजदूरी, उनकी लेडीज, अब वो घर में जो है उसको कूटती थी उस राइस को, उसमें क्या बोलते हैं उसको, ओखली में। अच्छा हाँ, अब वो समाट में वो उखली कर रही है, उसके बाद जाकर के वो राइस तैयार हुआ। तो ये और वेजिटेबल्स पता नहीं कहीं कुछ इधर उधर से ही आगे पीछे जमीन से या जो भी रहा करके किसी तरह से जो लंच है तैयार बना, उनके घर में बनता हो रहा होगा। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम में। अब मैं जब सोचता हूँ तो ये लगता है कि किस तरह से हो गया। और उसके बाद जाकर के लंच वो लोग बढ़िया से खाते होंगे, एक लंच, और फिर उसके बाद फिर रात का डिनर, फिर नेक्स्ट डे रूटीन। हमारे यहाँ सवेरे आओ, ले जाओ मेरे यहाँ से 5 किलो अनाज या 4 किलो, मेरे ख्याल में 4 किलो था उस तरह का रेट, इफ आई रिमेम्बर। तो 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है, और 4 किलो अनाज में हाउ मच यू कैन डू, लेकिन दैट्स व्हाट इज द मजदूरी ऑफ दैट टाइम। तो ये था साइकिल। और हमारी माँ एज ए स्टोर मैनेजर अपना पूरा साल भर उसमें से बांट रही हैं डेली पर डे। can you believe? So she was a grocery distributor in a way. So it's very interesting. I want to document all these things which I have experienced. You know, these things are not anymore. जैसे आप बोल ही रहे हैं कि it's not anymore, that life is gone. But I'm glad that it's gone. That was not a good life. Yeah. Yes, because right now I seen sir practically they are happy. Yeah. और ऐसा नहीं था कि हम लोग भी बहुत वेल ऑफ हुआ करते थे एज ए फार्मर। हम लोगों का भी वही हाल था। साल में 2 कपड़े मिलते थे, एक दुर्गा पूजा के टाइम में और एक होली के टाइम में। हाँ, तो राइट, तो एक साल में और पूरी फैमिली को कपड़े उपड़े मिलते थे, और बेसिकली दैट्स इट। और कोई मीट वगैरह जो है स्पेशल ओकेजन पे ही कभी बनता था। ऐसा नहीं था कि अपने यहाँ जैसे आजकल हम लोग खाते हैं जब मन हुआ मीट ले आओ। होली में या किसी खास इवेंट में मीट वीट बनता था, और नहीं तो बस रेगुलर भात दाल तरकारी खाते रहो भगवान का गुण गाते रहो। तो आज अपने यहाँ कौन सा दिन है? What day is today there? Saturday? Today is Saturday, yes sir. अच्छा, so then okay, so then I think प्लीज सर शाम में ट्राई करेंगे सर, शाम में ट्राई करेंगे ज्वाइन करने का सर। तो हम भी चाह रहे हैं सर। एक IIT के सर है, एक रेलवे से रिटायर्ड है, IIT पास आउट है सर, राजेंद्र मिश्रा समथिंग। तो बात किए हैं, उनको भी बोले हैं कि सर ऐसे ऐसे मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब इसको एनी हाउ सक्सेस करें। उसको बुलाइए उनको, बोलिए और कहिए कि उनका भी टाइम पास होगा, बिकॉज़ दिस इज आल्सो टाइम पास फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो यस, दैट विल बी गुड कि वो लोग आ जाएं और वी कैन हैव अ गुड चैट। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, हम तो लगे हुए हैं सर, कंटिन्यू। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। या ऐसा ही होता है ना, 1-2 आदमी को तो लगना पड़ता है। इफ यू एंड सुरेंद्र जी और पिलर, अरे वो नहीं देखते हैं आप, वेयर इज ही? प्रेम हाँ, शादी में फंस गया क्या? शादी में फंस गया क्या? नहीं, शादी तो हो गया है उसका। मतलब गृहस्थी में फंस गए क्या? कहिएगा कि अमर जी पूछ रहे थे गृहस्थी में फंस गए क्या? शादी करना तो आसान है, उसके बाद गृहस्थी का जो है दुलत्ती खाना जो है वो मुश्किल का काम है। We all know that. हनीमून तो पहले साल में ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो बस गर्दन पे जो है बोझ आने लग जाता है। तो वही हुआ कि भाई क्या हुआ, वो तो दिखते नहीं है। What is they told us they are trying to do something course
Oh, That's they're why the busy. reason they Okay. have no time. Yes. Okay, get it. Okay. ठीक है फिर. Okay, then I'll But see you guys. yes, yes. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, sir. We'll meet evening, sir. Yourself. Bye.